Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next chapter of your geography, that is chapter 6. The name of the chapter is manufacturing industry. Exactly in this chapter, we have to be learn about the different type of industries that is in our country. In the starting of the chapter, we have to learn, firstly we learn the importance of manufacturing industry. Then we learn about the mainly the role of manufacturing industry in the national economy. After this, the location of an industry. Under this, we have to be learn the various factor which affect the location of an industry, that where we have to be establish the industry and why. Okay, next is about the classification of industry, and then we have to be learn about the different industries that are in our country. Mainly we have to be learn about the major industries of the country. Okay, so this chapter is about the manufacturing industries. So let's start the chapter. In the starting of the chapter, we learn about the importance of manufacturing industry. Students, first of all, you know what you mean by manufacturing industries. Manufacturing industries means the industries that convert the raw material into the finished goods. Manufacturing industries are the industries that convert the raw material into a finished good, a good that we have to be used. Okay, to fulfill our basic needs, our requirements. Okay, they are known as manufacturing industries. Nowadays, the industries plays very important role in our day-to-day life. We are using many things from our morning till the night that are made by industries. Industries not only to provide the various goods to us, but also plays very important role into the economy of the country. So this is a very important part to understand that what is the role of manufacturing industries, what is the importance of manufacturing industries. So let's read it first. Production of goods in large quantities after processing from the raw material to more valuable product is called manufacturing. Okay, manufacturing, nirman karna, banana. Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and iron steel, iron ore, and aluminium from bauxite? You know about all these. Okay, where we and all these things are made in industries. Here we are also using cloths, they are also made in industries. Now, people employed in the secondary activities manufacturing the primary minerals into finished goods. As you learn about the sectors, primary sector, secondary sector, and tertiary sector, so the industries come under the secondary sector. All the industries are under secondary activities that use the primary materials into finished goods and turned into finished goods. Okay, so the workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. Which category? In the secondary activities. Okay, so this some people are employed in providing services. In this chapter, we are mainly concerned with the manufacturing industries which fall in the secondary sector. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Mainly about the manufacturing industries that fall in secondary sector. The economic strength of the country is also measured by the development of manufacturing industries. As the economy, they plays very important role into the economy of the country. Because of industries, we are getting lot of benefits, lot of employment.
and the many other things. So let's start reading the importance of manufacturing industries. What is the importance of manufacturing industry? How they are important for us? As I told you that these plays very important role in our day-to-day life. They are not only provide us the various goods to complete our needs, but also provide many other things. They provide us employment. That is very much important. So let us read the importance of manufacturing industries. If we are saying that manufacturing sector is the backbone of development in general and economy development, this is not wrong. This is absolutely right. It is a backbone. बैकबोन यू ऑल नो कि रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. विदाउट इंडस्ट्री अ कंट्री कैन नॉट बी डेवलप्ड. सो manufacturing industries not only help in the modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture. The very first importance is this is not only modernizing the agriculture, कि modernize नहीं किया इसने, सिर्फ modernize किया है ना. कैसे? By preparing tractors, threshers, combiner, all these things are used in agriculture and these are manufactured in industries, and because of these manufacturing in the agriculture become modernized. Except it, we are using many other things like fertilizers, pesticides, weedicides, all that are also manufactured in industries and that helps to make the agriculture modernizing. ठीक है. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर बट ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर. Because of industries, now people leave, some people, those are engaged themselves in agriculture activities, now they leave them and they are join the manufacturing industries. ठीक है. But by providing them jobs in secondary and tertiary sector, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर तो इंक्रीज होता ही है बेटा, बट टर्शरी सेक्टर ऑल्सो बिकम इंक्रीज्ड. वाई? बिकॉज इंडस्ट्री सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल लाना, ले जाना, फिनिश गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना, ऑल दीज फैसिलिटीज आर गिवन बाय टर्शरी सेक्टर्स. So because of manufacturing industries, not only secondary but also the tertiary sector increased, and that reduce the burden of jobs or employment on the from the agriculture. तो एग्रीकल्चर से जो बर्डन है वो रिड्यूस किया है किसने? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने. ओके. और एग्रीकल्चर को क्या किया है? मॉडर्नाइज भी किया है. सेकेंडली, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अ प्री कंडीशन for eradication of unemployment and poverty from our country. Industrial development is a precondition. Industrial development क्या है? एक condition है. किसके लिए? सबसे important condition है. किसके लिए? For eradicate unemployment and poverty from the country. Because of this, we are able to reduce the unemployment and poverty from the country. And this was the main philosophy behind public sector industry. And this is main thing. And joint sector entries in India, it also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. ये क्या करते हैं? इट वॉज एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटीज. इनका एम क्या है? कि हम रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस कर सकें बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज. रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब समझते बेटा?
Regional disparities means some areas are developed and some areas are less developed. That is called regional disparities. And because of industries, we are able to remove these regional disparities. Now government try to be establish the industries in those areas those are economically, financially behind, backward हैं जो, like industries in tribal and backward areas. Why? Because in the areas where the industries established, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाता है, ऑटोमेटिकली दैट एरिया बिकम established. How? Because if the industry is established there, people come to be settled there. Okay, transportation facilities are there. Transport facilities establish होंगी means road and transport network increase होगा, communication increase होगा, कम्युनिकेशन के जो वेज हैं, वेज ऑफ कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी. सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होगी. सो दैट एरिया बिकम ऑटोमेटिकली established. Why? Because of an industry. In our country, not only in our country but in the world, many areas are here, those are established just because of industries. If the industries are removed from that area, that in that area nothing is there. Okay, you can see the very good example of your place, the Yamunanagar. This is the hub of industries, and this is established just because of industries. There are many industries, sugar industry, paper industry, ISJEC is there, so many industries are here. So this area is developed just because of industries. Same many other areas are here. Okay, so industries plays an important role in removing the regional disparities. इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिमूविंग द रीजनल डिस्पैरिटीज. ओके, इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर एराडिकेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. एक तो क्या रिमूव कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी. दूसरा क्या कर रही है, रीजनल डिस्पैरिटीज को रिमूव कर रही है. यू कैन मेक इट हेयर द 2 points. ओके, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स. When we are exporting the manufacturing goods, exporting means when we are sending these in the other countries, in that way we are helps to increase our trade and commerce. हम अपना व्यापार इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जब हम फिनिश गुड्स को दूसरे कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, and that helps to broaden the foreign exchange, and in this way हम फॉरेन करेंसी अपने कंट्री में लाने में हेल्पफुल कर रही हैं. कौन? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. एंड इफ वी आर एबल टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज, देन वी बिकम इकोनॉमिकली डेवलप्ड. तो हम क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो जाएंगे. ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन exchange. This is also the third one importance of manufacturing industries. Okay, next, countries that transform their raw material into a wide variety of furnished goods. Countries जो ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को into the finished goods of higher value are prosperous. वो क्या बन जाते हैं, जिनकी वैल्यू हाई होती है, मतलब थोड़े कॉस्टली होते हैं, वो रिच हो जाते हैं. वाई? बिकॉज दे आर एबल टू बी सेल द गुड्स दोज आर हैविंग द हाई वैल्यू, जिनकी वैल्यू क्या है, हाई है. ठीक है, इंडियाज प्रॉस्पेरिटीज लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिटी इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल. इंडिया की प्रॉस्पेरिटी कहाँ लाई कर रही है, इन इंक्रीजिंग इन डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. इंक्रीज करने में और डाइवर्सिफाई करने में इसकी इंडस्ट्रीज को एज क्विक एज पॉसिबल, उतनी जल्दी जितनी पॉसिबल है. कहने का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है
वो इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो ऑल दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ये सारी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इम्पॉर्टेंस है. सबसे पहले इम्पॉर्टेंस क्या है? दैट दे आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड दे आर एबल टू रिड्यूस द employment burden on the agriculture and able to provide the jobs in secondary and tertiary sector. This is the first importance. Second importance, that is able to eradicate unemployment and poverty from the country. Third point, that is able to provide the that is able to decrease the regional disparities. ठीक है. And fourth one is export of able to provide the foreign exchange. And fifth one, that because of manufacturing industries country become prosperous fastly, okay, quickly. Now this all is about importance of manufacturing industry. Now this para explain you about that how the agriculture and industries depend on each other. Or we can say that agriculture and industries goes hand in hand. Okay, so let us read this. एग्रीकल्चर, ये बच्चे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट व्हाई एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गोज हैंड इन हैंड. हाउ कैन वी से दैट? सो रीड दिस पैरा नाउ. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से अलग नहीं है. दे आर मूव हैंड इन हैंड. दे आर मूव हैंड इन हैंड, एक दूसरे के साथ चलते हैं. फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर. नाउ डेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की वजह से, एग्रो इंडस्ट्रीज द इंडस्ट्रीज दैट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर लाइक कॉटन इंडस्ट्री, लाइक फर्नीचर शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, जूट इंडस्ट्री, तो वो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं. एंड एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर. और इन्होंने एक एग्रीकल्चर को एक इम्पॉर्टेंट बूस्ट दिया है बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. कैसे? एग्रो इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई इसलिए एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना पड़ा ताकि उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, ताकि वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को दे सकें. लाइक शुगर केन की प्रोडक्शन इंक्रीज की गई सो दैट वी कैन गिव द शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री. तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज. Second point, they depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pumps. They depend on the latter. वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? रॉ मटेरियल पर. कौन? एग्रीकल्चर. दैट इज मेड बाय इंडस्ट्रीज लाइक sell their products such as irrigation pumps. ठीक है. इसके अलावा इंडस्ट्रीज की जो थिंग्स हैं लाइक इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड द ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, मशीन्स, सारी की सारी दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज एंड देन यूज इन एग्रीकल्चर. ओके, तो इन दिस वे एग्रीकल्चर इनहैंस्ड एज वेल एज इंडस्ट्रीज इनहैंस्ड. ओके, नाउ etc. of farmers and the development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. कि जब एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की वजह से, कंपटीशन की वजह से, कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से, ना केवल एग्रीकल्चरलिस्ट ने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है, अपने लेवल को इंक्रीज़ किया है, बट ऑल्सो द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है. सो दैट मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट. और इसने प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत अच्छा बना दिया है बोथ इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज. ओके, सो in the present day world of globalization our industry needs to be more efficient and competitive.
आज के टाइम में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, इन द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और क्या होनी चाहिए, कम्पिटिटिव होनी चाहिए। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हों और किसी भी दूसरे कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को कम्पिटिट कर सकें। सेल्फ सफिशेंसी एलोन इज़ ऑन नॉट इनफ। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हम इंडस्ट्रीज़ में सेल्फ सफिशेंट हैं, नो, we have to be establish our industries in such a way that they can compete with the others. Our manufacturing goods must be at par in quality with those in the international market, that we can sell our goods in the international market, we can compete with that industries, not only of our country industries but of the world industries. Only then we have to be compete in the international market. So the industries plays very important role, and this is also important that industries should be developed. Okay, so this all about your importance of manufacturing industry. The next topic is contribution of industry to national economy. We will read in the next video. Till then, goodbye, thank you.